Hello friends. So in the last lecture we just completed the kingdom Monera, then Protista. Now we move to a new kingdom, kingdom fungi. Now you all are aware about this न्यू किंगडम फंजाई. फंजाई साहब सब लोग इतने वाकिफ हैं. ओके, सो एज यू नो कि व्हेन यू पुट सम ब्रेड okay in the dark place, then after in the moisture atmosphere, so after 2 or 3 days you get some dark spots on them, and if you put chapati or rotli, okay, then you also find some green or whitish spots, and you just see the thread like structure on them. So it is fungi. Okay, generally you go to the park in monsoon season, then you observe some whitish part which arise from the earth, and a globular part, it's called mushroom. So you know about the fungi. These all are the fungi like mushroom, mold. Then you all know that in the formation of bread and formation of cheese, then beverages, जहाँ जितने भी बेकरीज की आइटम है उन सब में यीस्ट इज यूज्ड. ओके, सो द सैप्रोफाइटिक, सबसे पहले जो हमने मोनेरा देखा है, द मोनेरा इज फोटोसिंथेटिक, देन हेटेरोट्रॉप्स बोथ. देन प्रोटिस्टा इज ऑल्सो, सम प्रोटिस्टास आर photosynthetic, chemosynthetic, but now the kingdom fungi are completely heterotrophs. Okay, they are depending on other animals, other organisms, or other organic materials or parasites. Okay, so fungi are having the various habitats for their living, okay, for their survival. So there are the different fungi, as you know कि हम अलग अलग fungi है जो use करते हैं in our day to day life. So first of all you know some the common fungi. सबसे पहले जो मैंने आपको mushroom, the example of mushroom जो मैंने आपको दिया, then the example of yeast. As you know, the mushroom and yeast is a single cellular organism, and the mushroom is the multicellular organism. So fungi are variety of organisms. Fungi having the variety of organism. They have these unicellular animals also, and they have multicellular also. Okay, so the thallus means the body of fungi is made up of different things. उसके बारे में बाद में बात करते हैं. But if there are single cellular, if they are multicellular, they have the diversities in their structures. Okay, so there are some other examples given in your textbook ki for an example, Puccinia is the parasitic fungi which is parasite in wheat, and they create a disease called rust. They create a rust disease in the wheat. Okay, so they are parasites. The second example is the yeast, the unicellular, वो मैंने आपको दे दिया है. Then third example is Penicillium, which is also famous example. Penicillin, maybe as you know about the Penicillium from the earlier classes. Okay, when you are in 8th or 9th, you know what is Penicillium. Penicillium is the fungi who produce the antibody. Okay, antibiotic. Sorry, my mistake. Penicillium है वो they produce the antibiotic. Okay, when which we can isolate from this fungi, and we can use the medicinal field for our body protection. जब हमें कोई वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है, सो उसकी वजह से जब फीवर होता है, सो पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स में दिए, वायरस में नहीं, बैक्टीरियल और फंगल डिसीज हुए हैं तो अगर आपको हो तो आपको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं फॉर द किलिंग ऑफ दैट एंटीजन विच इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, और विच इज एंटर इन योर बॉडी. जो आप बाहर से आए हैं कोई ऐसे पैरासाइटिक मटीरियल्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, सो एंटीबायोटिक है वो उनको किल करता है. तो पेनिसिलियम इज अ यूजफुल फंजाई. सो सम फंजाइज आर यूजफुल बट सम फंजाइज आर हार्मफुल ऑल्सो. फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक्जिमा होता है, देन काफ़ी ऐसी बीमारी, स्किन डिजीज, एलर्जीज, सोरियासिस, वो सब होता है ड्यू टू दी infection of fungi. So fungi are useful and fungi are harmful both. But there are some fungi which is useful for plant also and harmful for plant also. For an example, अभी मैंने Puccinia का जो example दिया, Puccinia is harmful for wheat,
But if you talk about the mycorrhiza is a fungi which is living in the जिम्नोस्पर्म प्लांट है, उनके रूट में वो सर्वाइव करती है. सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर जिम्नोस्पर्म प्लांट. सो एज यू नो कि फंजाइज आर हार्मफुल एंड बेनिफिशियल बोथ. ओके, नाउ आगे कि सबसे पहले व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई. इफ यू सी यू ऑब्जर्व सम, मैंने अभी आपको बोला कि यू ऑब्जर्व सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन फंजाई, यू ऑब्जर्व सम स्पोरिक और सैक लाइक स्ट्रक्चर इन फंजाइज. सो देयर इज जो थ्रेड है उनके थैलस में, थैलस मीन्स उनके बॉडी जो है बना हुआ है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफा, and these threads are joined together and they form a net like structure. वो net बनाते हैं. So the network of this hypha, it's called mycelium. No, first of all this thing कि as you know that कि the different thread like structure, it's called hypha. Now the hypha, they arrange together in like different manners and they create a net or network. They create a coiled or net like structure. They create a network on, or so this network is called mycelium. Okay, now what is the structure of hypha? अगर आप उसकी स्ट्रक्चर में, हाइफा के स्ट्रक्चर में, जो थ्रेड है उसके स्ट्रक्चर में जाए, तो जो थ्रेड है हाइफा है, इट इज मेड अप ऑफ simple cells. So sometimes the hypha is multicellular, hypha is multinucleated cytoplasmic structure है, जिसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस है, बिकॉज some hyphas are not separated by septa or membrane, so they are multinucleated, ऐसा बोल सकते हैं. So some hyphas are multinucleated, some hyphas are unicellular. Why they are unicellular? Because they are separated through a septa or through a membrane. So they become the unicellular. So they have the single nucleus in their cytoplasm. Okay. So hypha and this mycelium. Now you are aware about these two things. Okay. What is hypha? Hypha is thread-like structure, small filamentous, and they create a net जब वो create करता है तो उनको बोलते हैं mycelium. ओके, क्लियर. और हाइफा भी दो टाइप का होता है. ओके, अगर उनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा है, उनके अंदर सेप्टा नहीं है और कंटिन्यूसली वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा बनाता है, सो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा को बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ. If the hypha is multinucleated, then multinucleated hypha is called कोएनोसाइटिक हाइफा. मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफा है, उसको बोलते हैं कोएनोसाइटिक हाइफा. So this is कोएनोसाइटिक हाइफा. Okay, now next, what about the fungi what about the reproduction in fungi? So now you are aware about the structure of fungi, the example of fungi. Okay, now sir, what about the sexual, asexual and vegetative reproduction in fungi? So first of all, you observe and you have learned also कि there are the vegetative reproduction observed in the fungi. So there are the budding, fragmentation, then regeneration are general vegetative reproduction of fungi. जो fungi है वो इन तीनों जैसे budding है, देन फ्रेगमेंटेशन है, देन रीजनरेशन है, वो इस तीनों की तरह जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. ये तीनों की हेल्प से, मीन्स ये तीन उनकी पैटर्न है कि ये ऐसे ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं होते, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. इट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बॉडी का कोई भी पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है, दिस कॉल्ड asexual reproduction. Without gamete means asexual reproduction. If there is no formation of gametes or if there is no use of gametes during the reproduction, it's called asexual reproduction. So in the asexual reproduction there is the different spores. Okay, so हाँ, मैं ये बताना भूल गया था आपको कि मैंने अभी भी आपको बताया, बट फिर से रिपीट करता हूँ कि सम फंजाइस आर सैप्रोफाइटिक, सम आर पैरासाइटिक, जिसका भी मैंने एग्जांपल दिया, सम आर सिम्बायोटिक. सो सिम्बायोटिक का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है कि माइकोराइजा है, वो जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर रहती है. सेकेंड एग्जांपल इज लाइकेन. ओके, Lichen is symbiotic organism of
fungi and algae. So algae and fungi both are live together and it's called lichen. Lichen is an individual animal, so they are symbiotic also, they are parasitic, they are saprophytic. Okay, these are the varieties of fungi. Now we move to the original topic is asexual reproduction. So they produce a different spores for the asexual reproduction in the spore sac. Okay, और जिसको बोलते हैं स्पोर के लिए उनके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है. ओके, सो दे फॉर्म अ कॉनिडिया. ओके, कॉनिडिया फॉर्म करते हैं फॉर दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एक टाइप का स्पोर है. एंड सेकंड जू स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. दे आर जनरली 2n मीन्स डिप्लोटिक है, डिप्लॉइड है जो उनका न्यूक्लियस है वो. सो दे फॉर्म दी स्पोर्स फ्रॉम देयर नॉर्मल पार्ट्स. ओके, नॉर्मल माइसेलियम कोई भी है, उस माइसेलियस से हाइफा से वो प्रोड्यूस करते हैं अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, और सैक के अंदर वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. सो कॉनिडिया जिसको बोलते हैं और जूस्पोर, दिस टू टाइप ऑफ asexual reproduction observed in the fungi. Now what about the sexual reproduction? Now it has some variety. Okay, it has some variety in the sexual reproduction. Sexual reproduction is happened through फिर से spore formation. They produce the different spore with the help of different characteristic. वो क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ. But they produce a spore. Okay, from after zygote formation. Okay, so they produce a spores like different spores, oospores, ascospores and basidiospore. Now these spores are classified according to their class, because in the fungi there are 4 classes: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycosis, Deuteromycetes. So there are 4 classes. Okay, now according to these classes, these spores are different. Like if the fungi are Ascomycetes, so the spores are ascospore. If the fungi is Basidiomycetes, so the spores are Basidiospore. But here we just discussed about the general character of fungi. That's why I am writing the whole 3 spores like oospore, Basidiospore, ascospore. Okay, and they are produced by a fruiting body. It's called they are producing by a specific or structure. It's called fruiting body. यहाँ ये तीनों जो बनते हैं वो fruiting body में बनते हैं. उन fruiting body का भी एक नाम है. For an example, sorry, मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ गई. For an example, if the ascospore is produced by a fruiting body, so the fruiting body is called asci. Or the basidiospore is forming by basidiocarp or ascocarp. Sorry, उसको carp बोलते हैं. Carp, sorry, my mistake. So उसको बोलते हैं ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो होता है उसको आस्की बोलते हैं, जिसमें स्पोर होते हैं. सो ये पूरी आस्की जिसमें प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं आस्कोकार्प. ये मैं रिपीट करूंगा फिर से क्लासेस में, लेकिन फिर से बोलता हूँ आस्कोकार्प, उसके अंदर आस्की और उसके अंदर आस्कोस्पोर. दिस इज लाइक फिनोमेना कि सबसे पहले आस्कोकार्प मीन्स फ्रूटिंग बॉडी, उसके अंदर आस्की है और उसके अंदर आस्कोस्पोर है. सेम एज बेसिडियोकार्प, बेसिडियास की वो मैं नाम भूल गया, देन बेसिडियोस्पोर. ओके, सो दिस इज लाइक स्ट्रक्चर, these are the structure. So these are the sexual reproduction जब होता है तो उसके अंदर ये स्पोर बनते हैं. Now ये स्पोर कैसे बनते हैं? So there are the 3 different steps of the life cycle of fungi. The first step is plasmogamy, means cytoplasm fuse होते हैं. 3 steps. The first step is plasmogamy, means the 2 different hypha are joined together. Then it's called plasmogamy. मीन्स साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं. नाउ न्यूक्लियस इज नॉट येट फ्यूज्ड. ओके, नाउ सेकेंड, नाउ द कैरियोगेमी. नाउ न्यूक्लियस विल फ्यूज्ड. ओके, पहले क्या फ्यूज हुआ? साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस फ्यूज हुआ. न्यूक्लियस फ्यूज होते ही दे फॉर्म अ 2n डिप्लॉयड जाइगोट. देन मियोसिस विल हैपन. सो 2n से वो फिर से हो जाएंगे n. ओके, एज आई नो कि आप लोगों को समझ में नहीं आया. ओके, यहां से मैं बता सकता हूं, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा आपको कि सबसे पहले ये 3 चीजें आप स्टेप याद रख लीजिए. पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, देन न्यूक्लियस फ्यूज होता है और देन मियोसिस होता है. अब मियोसिस क्या है ये आपको मालूम है. नाउ
सबसे पहले फॉर एन एग्जांपल, दिस इज एन हाइफा, this is a single hypha, now this is a different hypha, so two different hyphas are there. Now these two hyphas are joined together and they form a single hypha, but two nucleated, means binucleated, उनके दो न्यूक्लियस है. Okay, so it's called plasmogamy. Clear? They have the two nucleus, it's called plasmogamy. Now both nucleus will join together. So the one nucleus is haploid, second nucleus is also haploid, means half number of chromosome है. Now they fuse together and form a 2n diploid zygote will form after the karyogamy. Karyogamy means, karyo means nucleus. So karyogamy जैसे होता है, means nucleus दोनों fuse होते हैं, they form a 2n diploid zygote. Okay, now the formation of 2n diploid zygote, this cell undergoes the meiosis cell division. So after meiosis they form a haploid spores. Now these are the spores. Okay, so they form a haploid spores. Clear? And these spores, if the spores are present in ascomycetes, it's called ascospore. If these spores are belonging from basidiomycetes, then it's called basidiospore. Okay, so these are the characteristic of whole fungi. Now you all know aware about the fungi, what is fungi, and these are the different characteristic of fungi. पहले तो उसके examples क्या है, Puccinia, mushroom, yeast and whatever. Then the characteristic, different characteristic, उनका structure क्या है, then वो उनका habitat क्या है, then उनका reproduction क्या है. So this is one type of most IMP question is there. So fungi is important, okay, and it is easy, okay, clear. So यहाँ तक रखता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंजाई के क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो यहाँ तक रखता हूँ. बाय.